Good morning, students. Hope you understand the concept of change and various important terms of the change management like change target, change interventions, change management, etc. Now, we are going to cover what are the factors that lead to change. There are various factors, maybe it internal or external. Internal cause are falling effectiveness. जब आपकी effectiveness डाउन होने लगती है, that force you to change the crisis that we are facing. Okay, then change in employee expectation. आपकी expectation में अगर changes होने लगे, then आपको जो है change की ज़रूरत पड़ सकती है. That force you to change. Then change in the working climate, retirement, transfer, promotion, change in the mission or objective of the company. This may be occasioned as a result of merger and amalgamation, maybe. Then change in the location of the organization, then change in the top management personnels, and maybe there are certain deficiency in your existing system like unmanageable span of control you have, lack of coordination between the department, maybe obstacle in communication, lack of uniformity in the policies, maybe non-cooperation between line and staff, etc. These are the reasons basically which force you to bring change in the organization, in the group, in the individual. Then external causes like globalization, which force us to change, to adopt a new technology, to adopt a new method if you want to survive. Workforce diversity is there that make an organization reposition itself to adopt e-commerce environment, etc. Technological change are there. It results in a flattering structure, decentralized decision making, more open communication across the employees. Then your ethical behavior that should touch the areas such as your product safety, employee safety, sexual harassment, smoking, and your you can say waste disposal, transfer pricing, etc., which count our ethical behavior. And nowadays it is very important to be act accordingly because you are living in the society that force you to bring change. Then certain government policies are there, competition, scarcity of resources are there. That is, आपने देखा होगा पेट्रोल की स्कैसिटी है तभी तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली अब आप देख रहे हो मोटर व्हीकल्स एंड ऑल आने लगी. Okay, then social changes, the level of education has changed, feeling of autonomy has come, that force us to bring change. So these are the external internal factors which bring or which force us to bring change. In this there is one important terminology, that is domino effect. When change effect of change, the chain effect of change means a change touch a sequence of related and supporting change known as domino effect. मीन्स एक चेंज आप लेके आए, उसी की चेन में आपको दूसरा चेंज भी लाना है उसको अडॉप्ट करने के लिए, फिर आपको तीसरा चेंज भी लाना है. ठीक है, मीन्स एक चेंज के बाद वन बाय वन आपको चेंज अगर इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ डोमिनो इफेक्ट, क्योंकि उसको सपोर्ट करने के लिए आपको वो चेंज कर रहे हैं. टू ब्रिंग द इक्लिबेरियम पोजिशन मीन्स चेंज ब्रिंग अ डिसइक्लिबेरियम, and to bring a new equilibrium organization has to modify many aspects of the organization. Okay, suppose you want to change the level of your output. अब लेवल ऑफ आउटपुट आपने चेंज करना था, आपने 2000 यूनिट बना रहे थे, अब आप 4000 यूनिट बनाएंगे. ठीक है, बट उस 4000 यूनिट बनाने के लिए यू नीड अ चेंज इन योर मशीनरी, इन योर एम्प्लॉयज. Okay, so that is a domino effect, means one change bring several changes with it. Clear? Next is the type of changes. Reactive and proactive change. When force compel
organization to implement change without delay, that is reactive change. And proactive change that occur when some factor may realize organization think over and finally decide that implementation of a particular change is necessary. मीन्स रिएक्टिव क्या है? मीन्स आपको फोर्स हुआ कोविड में कि हमें ऑनलाइन पढ़ाना है या हमें ऑनलाइन पढ़ना है. और प्रोएक्टिव क्या है? जो आपने पहले से फोकस करा. यू रिमेंबर द एड ऑफ आइडिया कि दूर में कैसे पढ़ाऊँ बाय फोन. ओके, दिमाग में आपके बहुत से लोगों के पहले से आ गया एंड उन्होंने अपने आप का सेटअप इस तरह से करा कि नो वी हैव टू टारगेट दैट ऑल्सो. दैट इज अ प्रोएक्टिव चेंज that occur when some factor make realize organization think over and finally decide that implementation of a particular change is necessary. Okay, prospectors identify new opportunities and thread in the environment, so change is introduced in a planned manner. See the reactive and proactive change. Reactive change involve a reflexive behavior. मीन्स आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग. ओके, इट कवर लिमिटेड पार्ट ऑफ द सिस्टम. जहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट है आप उसी को कवर करते हैं उस समय. एंड रिस्पॉन्ड टू इमीडिएट सिम्टम्स. जो इमीडिएट सिम्टम्स हैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. बट प्रोएक्टिव क्या है? इट इन्वॉल्व अ पर्पसिव बिहेवियर. आप सोच समझ के जो है अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं विच हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव, सर्टेन पर्पस एंड कोऑर्डिनेट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एज होल and address the underlying force certain symptoms. जो कुछ certain symptoms आपको दिखे आप उसको address करने की कोशिश करें. आप पहले से predict कर रहे हैं कि what need to change. Clear? Means proactive में क्या आप पहले से ही focus कर रहे हैं, पहले से जो है आपके जो prospectors हैं identify कर रहे हैं new opportunity or new threat and accordingly you are managing yourself by bringing change in a whole organization. Now a planned change or a development change. Planned change is undertaken to improve the current way of operating. It is a calculated change initiated to achieve a certain desirable output or performance and to make the organization more responsive to internal or external demand. Clear? So planned change क्या है? Is a strategic change. They are the result of deliberate action of the management to make an enterprise different by introducing new technology strategy. Means आप सोच समझ के जो changes लेके आ रहे हैं in a very planned manner. Okay, like increasing your plant capacity that I have discussed right now. Clear? Means enhancing employees' communication skill, maybe technical expertise, building teams, restructuring the organization, introducing new technology, or changing the incentive system, improving employees' welfare measures, and the like fall into this category. So, any change you want in a planned manner, that is a planned change. Planned change has certain features like every planned change has a direction. Because it is a planned, so we have a certain direction where we have to reach. The change has a basic purpose and rationale. The means used to bring about the change influence the quality and direction of the change. Any change process, the adoption rate is vary. मीन्स आपको एक चेंज लाना हो सकता है इसका अडॉप्शन रेट अलग हो और दूसरे का रेट अलग हो. जरूरी नहीं कि सारे चेंजेस को एक साथ ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करे. इट मे बी चेंज. क्लियर? These are the factors of the plan change, like structure, which we need to change. Maybe we need to change task, maybe we change people, maybe we change technology. These are the factors that is required in a plan change, that we need to change in a plan change, maybe.
Then objective of the plan change. Why we go for plan change? Because we have to adopt environmental changes. Individual adaptation is there, structural adaptation is there, technology adaptation is there, task adaptation is there. These are the objectives that force us to make any plan change. Environment आपको force कर रहा है, maybe individual force you, maybe structure force you, maybe task has changed, maybe technology has changed. आप उन्हें adopt करना चाहते हैं तो आप हो सकता है आप लोग change कर रहे हैं. Clear? Now, the process of change. First of all, you have to identify the need. Clear? You have to identify the need for change. You have to identify the gap. You have to do a gap analysis between desired and actual state of affair. Then, element to be changed. It is not required that everything has to be changed. You need to identify the element. Depend on the need, objective of the change, you need to identify the element. And basically we have a three major element, that is organization structure that we need to change, technology and people. ये तीन चीज होती है हमारी बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हम चेंज करते हैं. देन प्लानिंग फॉर चेंज. अब आपको प्लान करना है कि कैसे ये चेंज होगा. ठीक है, इसमें आप क्या प्लान करते हैं? हु विल ब्रिंग चेंज, हु विल ब्रिंग चेंज, व्हेन टू ब्रिंग चेंज एंड हाउ टू ब्रिंग चेंज. क्योंकि कब कैसे और कहाँ चेंज लाना है ये प्लान होना ज़रूरी है, तभी उसका इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं. देन असेसिंग द चेंज फोर्स. देयर आर मैनी फोर्सेस इन इंडिविजुअल, ग्रुप, इवन इन ऑर्गेनाइजेशन विच रेसिस्ट सच चेंज. सो यू हैव टू असेसिंग दैट चेंज फोर्स कि किस टाइप का चेंज फोर्स है. ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू ओवरकम फ्रॉम दैट रेसिस्टेंस, क्योंकि हो चेंज एकदम से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. यू हैव टू ट्राई टू कम ओवरकम फ्रॉम दैट. एंड चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस सक्सेसफुली ओनली व्हेन दीज आर कंड्यूसिव फैक्टर्स इन एग्जिस्टेंस इन द सिस्टम. जब कंड्यूसिव फैक्टर्स होंगे तभी आप चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. आपको रेसिस्टेंस टू चेंज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, क्या हो सकते हैं. जैसे आप लोगों की हमें ऑनलाइन क्लास लेनी थी तो रेसिस्टेंस टू चेंज क्या था? कनेक्टिविटी इशू. द मेजर प्रॉब्लम कि हम ऑनलाइन नहीं मिल सकते. सर्टेन एरियाज आर देयर वेयर इंटरनेट इज नॉट सो गुड. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? अपलोडेड लेक्चर्स, so you can download from whenever you want according to your comfort. Okay, तो दिस इज द वे. क्योंकि बहुत से बच्चों ने मना किया कि हम ऑनलाइन नहीं कर सकते, दे आर रेसिस्ट टू चेंज, दे डोंट वांट टू चेंज. बट इसको सॉल्यूशन उनको जब मिला देन दे आर रेडी टू चेंज. ठीक है, बेसिकली लुइस डेवलप अ यूजफुल टेक्निक फॉर दिस, दैट इज फोर्स फील्ड एनालिसिस. And three terms was introduced by him. Driving force means push to change, and restraint forces, force push toward a preserving. ड्राइविंग फोर्स क्या है? जो आपको मोटिवेट कर रहा है कि चेंज होना चाहिए. रिस्ट्रेंट फोर्स क्या होते हैं? जो आपको पुश कर रहे हैं कि हमें चेंज नहीं होना है. ठीक है, हमें प्रिजर्व रहना है, जैसे हम हैं वैसे ही रहना है. And when two opposing forces are approximately equal in opposite direction, then it is called a quasi-static equilibrium. ठीक है, एक है जो कहता है चेंज हो, एक है जो कहता है चेंज नहीं हो, और उनके बीच की जो कंडीशन होती है वो होती है quasi-static equilibrium. And for changing behavior, the force maintain and restrain force must be overcome and can be accomplished by increasing driving force. और अगर आप किसी के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये जो रिस्ट्रेन फोर्स है, जो मना कर रहा है कि चेंज नहीं होना है, उसे कम करना है और ड्राइविंग फोर्स को इंक्रीज करना है. क्लियर? तो वी विल डन दिस इन असेसिंग चेंज फोर्सेस. देन एक्शन फॉर चेंज. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ चेंज. ओके, तो एक्शन फॉर चेंज मीन्स अब आप एक्शन ले रहे हैं उस चेंज को करने के लिए.
where you have another process. First you have to unfreeze, then changing, then refreezing. Okay, and finally then feedback is come ki whether this change is helpful or not. See, the process of unfreezing, movement or change, you can say, then refreezing. Means unfreezing means occur when the change agent convince member of the group to change, or when guilt and anxiety and all are causes. मीन्स यहाँ आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि चेंज हो. चेंज एजेंट का काम क्या है? मोटिवेट करना, कन्विंस करना मेंबर को, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनको समझाना कि विद द हेल्प ऑफ दिस इट विल हेल्प यू. Then movement means now the change process started. Change agent identify plans are made, implement appropriate strategy, change interventions are introducing, and finally trainings are given. So the changes occur at this stage. And then rephrasing, where the change agent assists in stabilizing the system to change so that it become an integral status quo. मीन्स आपका इंटीग्रल पार्ट बन सके, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप रीफ्रीज कर रहे हैं. ठीक है कि यस नाउ इट इज़ ओके, यू आर ट्रेंड, नाउ यू अप्लाइड, और रीफ्रीज आपने कर दिया जो चेंज आप इम्प्लीमेंट करना चाहते थे. सो चेंज एजेंट इज आउट देयर, ब्रिंग सपोर्टिव, helping people adopt, making sure you have a tool that you need to sustain the change. Make sure you have a reason that you know why, making sure everything is stable. Usually it take about 3 to 6 months, and we should never attempt to change unless that change agent can stay there for the entire time. So जो रिस्पॉन्सिबल है चेंज एजेंट, जो हमारे लिए चेंज लेके आ रहा है, वो वहाँ रहता है, वो हमें सपोर्ट करता है, वो हमें समझाता है. जैसे आप ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में जब तक आपके ट्रेनर आपके साथ है तब तक आप चेंज करने की कोशिश करते हो, वो समझा रहा है, आपकी प्रॉब्लम से आपको ओवरकम करा रहा है. एंड देन जब आप समझ जा रहे हो तो आपका टेस्ट लेके आपको कहता है येस यू आर डन नाउ. ठीक है, यू आर रीफ्रीजिंग दैट. तब जाके आपका चेंज इम्प्लीमेंट होता है. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडे लेक्चर. नेक्स्ट we will cover the responses to change, how to handle resistance to change, etc. Thank you for the day.